चलो 343। मॉब कंपनी। Mob Company manufactures electronic mobility scooters. The company is split into two divisions: the scooter division, Division S, and the motor division, Division M. Division M supplies electronic motors to both Division S and to the external customers. The two divisions run as autonomously as possible, subject to the group's current policy that Division M must make internal sales first before selling outside the group, and that Division S must always buy its motors from Division M. However, this company policy, together with the transfer price which Division M charges, Division S is currently under review. Details of the two divisions are given below. Division S. Division S's budget for the coming year shows that 35,000 electronic motors will be needed. An external supplier could supply these to Division S for 800 each. Division M. Division M has a capacity to produce 60,000 electronic motors per year. Details of Division M budget, which has just been prepared for the forthcoming year, are as follows. Budgeted sales volume 60,000. Selling price per unit for external sales of motors is uh, 850. Variable cost per unit for external sales of motors is 770. Variable cost per unit of motors sold by Division S is 30 per unit, lower due to cost of due to cost savings on distribution and packaging. पर एक सेकंड रुक जाओ। जो हम एक्सटर्नल बेच रहे हैं उसमें से 30% कम। नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मोटर सोल्ड टू डिवीजन एस इज 30% लो पर यूनिट, लोअर। ओके ओके, मतलब 740। ठीक है। मैक्सिमम एक्सटर्नल डिमांड फॉर मोटर्स इज 30,000 per year. Okay. Assuming that group's current policy could be changed, advise using suitable calculation the number of motors which Division M should supply to Division S in order to maximize group profits. Recommend a transfer price or prices at which these internal sales should take place. Sorry, should take place. तो ट्रांसफर प्राइस तो सामने से दिया हुआ ही है अपने को। ये पहला। हाँ। हम्म, वो होल्ड पे उस पे नहीं। 343 डिवीजन एस, डिवीजन एम इधर लिख देता हूँ। डिवीजन 40 रुपया होगा। कितना है? डिवीजन एम, डिवीजन एस, टोटल, और फिर लास्ट में टोटल। चलो पूछो, हाँ कुछ पता आने वाला। हम्म। अभी सबसे पहले तो अंडर करंट पॉलिसी, अंडर करंट पॉलिसी, ये सम एक्सेल में क्यों नहीं आया, ये सम वर्ड में क्यों दिया है इन लोगों ने? ऐसा वो क्यों तो पता करते हैं नहीं ये होगा। लोग? ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? तो मैं इस सम को एक्सेल में सिंपल लोग रहेंगे। मुझे इस सम को वर्ड में ही सॉल्व करना पड़ेगा। भाई सही में तू वर्ड में सॉल्व कर रहा है? भाई कसम से अभी ये चीज वर्ड में आई है तो कैसे सॉल्व करेगा? प्रिंटिंग मिस्टेक भी तो हो सकता है। नहीं भाई, अगर आई भी होगी तो भी मैं इसको वर्ड में सॉल्व करने का ही ट्राई करूंगा।
देख, सबसे पहले यार तू गद्दारी कर रहा है। अंडर द करंट पॉलिसी, अंडर द करंट पॉलिसी 30,000 इलेक्ट्रॉनिक motors should be supplied by division M to division S, बराबर है। हम्म। Thus the maximum capacity available with division M after the internal transfer is only 30,000 units, which it can sell externally. हम्म। The sales earned would be हम्म। the sales earned, ना, the sales earned would be, अभी सबसे पहले तो कैलसी पे कर लेता हूँ मैं ये, 85 इंटू 30,000, 25,50,000 from external वो sales. दूसरा खुल गया था। The internal sales would be, वापस एक बार 30,000, लेकिन इस बार इंटू 740। मैंने पहले कुछ गलत किया था शायद, क्योंकि मेरा पहले वाला अमाउंट बहुत ज्यादा कम आ रहा है। दो तीन, रुक जा फिर से बार करता हूँ। 850 था ना प्राइस? हाँ, 850 इंटू 30,000, 5 बार जीरो है कि 4 बार, हाँ यहाँ पे एक जीरो मैंने कम डाला, यहाँ पे एक बार जीरो डाल दिया। ठीक है, तो इधर एक दो तीन, 10, द टोटल रेवेन्यू अर्नड वुड बी 477, एक दो तीन, एक दो, 10, द टोटल रेवेन्यू अर्नड वुड बी जीरो। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मोटर्स सोल्ड, दिस इज 30%। एक्चुअली ट्रांसफर प्राइस इन्होंने ना वैसे नहीं कैलकुलेट करना चाहिए, ट्रांसफर प्राइस अलग तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए। एक्सटर्नल सेल्स एंड द इंटरनल सेल्स वुड बी calculations, internal transfer calculations, the internal transfer price should ideally include the variable cost of production and the lost contribution from external sales being made, because division M is currently working at full capacity. Thus, the transfer price would be 770 minus 30 plus, कितना करूंगा अब मैं, 850 minus 770 would be 80, plus 80 because this is the lost contribution, which is 770 minus 30 plus 80, which is 820. Thus, the transfer price now would be 820। तो 820 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30,000 को, तो मुझे मिलता है 24600 प्लस 255
मुझे आता है 501। Changed. A group's current policy could be, assuming that group's current policy could be changed. अभी वापस एक बार कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, changing the current policy. If the current policy of the group is being changed, group is being changed, then the external demand will be fulfilled first, and later on the internal demand would be fulfilled. एक मिनट ना. द इंटरनल, इधर मैं ये मैंने अपने पॉइंट नहीं लिखा. द इंटरनल transfer cost being borne by division S would be 2,46,000 एक दो तीन, thus increasing the burden on them as well. If the current अभी ये changing the current policy में क्या होगा? तो ऐसे चेंज, हाँ पहले तो हम एक्सटर्नल डिमांड फुलफिल करेंगे, बाद में इंटरनल डिमांड पे आएंगे. दस द एंटायर, अरे एक मिनट, मैंने एक गलती कर दी. मैं इंटरनली 35,000 दे रहा था और एक्सटर्नली 25,000 दे रहा था, तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे और यहाँ पे 30,000 ही ले लिया अमाउंट. यहाँ पे और यहाँ पे 30,000 नहीं लेना चाहिए था. यहाँ पे 35,000 एक्सटर्नल है, तो यहाँ पे सबसे पहले 25,000 मैं इंटरनल दूंगा. जल्दी करना 25,000 इंटू 850, तो जल्दी करने का। तो वो आएगा 212500. राइट, और यहाँ पर इंटरनल सेल्स मैं पहले फुलफिल कर रहा हूँ, विच इज 35,000 एंड नॉट 30,000 विच आई had assumed first. So that will be 35,000 into 820, which is the transfer price they are bearing. It will be 2870 एंड ऐसा सब. 10, ये मुझे यहाँ पे क्या था? टाइम याद है कि मैंने ऊपर भी तो सेम किया है, तो नीचे अलग अलग होगा. 10 द एंटायर ये external बोलना क्या demand should be first satisfied. करने वाले पे डिपेंड करे, 10 अभी करने वाले पे। 850 into 35 30,000, which is the external demand. Thus the external demand should be satisfied first, thus making the revenue 255 एक दो तीन चार पाँच 2870. Thus the entire external is satisfied, thus making the revenue 250 just from external sales. So now that division M has spare capacity, मैं तो बोल दी। now ओ, that division M has spare capacity, it should fulfill the demand of the internal division, making the transfer price now only 740 as the selling division
Now that the division M has spare capacity to fulfill the demand, now that the division M has spare capacity and इसमें मैंने सेम चीज ऊपर भी लिखी है नीचे भी सेम चीज सही नहीं लग रहा and the demand to making it 750 which is 770 minus 30 वो 30 क्यों काट रहा हूँ वो भी बाद में यहाँ पे लिख दूंगा डॉट 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 हाँ the remaining 5000 units could easily be ordered from the कौन सा division from the external supplier. Now the total sales would be यहाँ पे 740 इंटू 25,000 में नहीं किया ना पहले यहाँ पे 5,000 making the sales be 185,000 एक दो तीन would be plus 255,008 भी भी 44,000 एक दो तीन दो the sales now look Into the lesser demand. for one division, but now the but now the division S manager would be motivated to as work as he slash she were able to get the goods or the get the components या जो भी था वो यार get the electronic motors at a cheaper slash much better rate. Actually नहीं यार cheaper much better rate नहीं ठीक है at a cheaper rate than the previous policy. यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे कि the previous manager will be demotivated to work. बस इतना ज्ञान ठीक है आज के लिए भाई बहुत ज्ञान हो गया अच्छा इन्होंने यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव्स बनाए डिवीजन एम और डिवीजन एस के राहुल मैं पढ़ूँ कि तू कर रहा है अभी भी फॉर एवरी मोटर सोल्ड एक्सटर्नली Division M generates a profit of 80 for the group as a whole. For every motor which Division S has to buy from outside of the group, there is an increment cost of 60. तो इन्हें निकाला है. Therefore, from a group perspective, as many external sales should be made as possible before any internal sales are made. Consequently, the group's current policy will need to be changed. This does not, however, assume that quality of the motors bought from the outside group as the is the same as the quality of the motors made by division M. Okay, where काफी अच्छे points. Division M's total capacity is 60,000 units. Given that it can make external sales of 30,000 units, it can only supply 30,000 of the division S's demand for 35,000 motors. These 30,000 units should be bought from division M since from a group perspective, the cost of supplying these internally is 60 per unit, cheaper than buying externally. The remaining 5,000 motors required by Division A should then be bought in from the external supplier at 800 per unit. In order to work out the transfer price, which should be set for the internal sales of 30,000 motors, the perspective of the month of both divisions must be considered. तो इनके दोनों के इन्होंने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिए फ्रॉम डिवीजन एम्स पर्सपेक्टिव division M's only buyer for these 30,000 motors once external demand is exhausted is division S. So the lowest price would be prepared to charge is the marginal cost of making these units and selling them internally, which is 740 per unit. However, it would ideally
want to make some profit on these motors too and would consequently expect a significant higher price than this. From Division S's perspective, Division S knows that it can buy as many external motors as it needs from outside the group at a price of 800. Therefore, this will be the maximum price. Oh, right. ये point मैंने बोला नहीं. Therefore, the maximum price which it will be ready to pay or prepared to pay. Overall, therefore, the transfer price should be set somewhere between 740 and 800 from the perspective of the group. The total group profit will be the same irrespective of where in this range the transfer price is set. However, it is important that divisional and staff remain motivated given the external sales prices which division M can achieve and the fact that division S would have to pay 800 for each motor bought from outside the group. The transfer price should probably be at the higher end of the range. ओके मतलब ये लोग कि 740 और 800 में से हायर रेंज में होना चाहिए ताकि डिवीजन एम को भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिले और वैसे भी डिवीजन एस को तो 800 से कम में मिल ही रहा है सो इट्स बेटर फॉर हिम ऑल्सो देख मैंने यहाँ तक सम किया हुआ है ए पार्ट तक अभी यहाँ से बी पार्ट से करना बाकी है ओके। कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट द रेसिडुअल इनकम फॉर ईच ऑफ द टू डिविजन्स ठीक है चल Each of MOB's divisions is managed by divisional manager who has power to make all investment decisions within the division. The cost of capital for both divisions is 12%. Historically, investment decisions have been made by calculating the return on investment of any opportunities, and at present, the return on investment for each division is 16%. ठीक है. ठीक है। The new manager who has recently been appointed in Division S has argued that using residual income to make investment decisions would result in a better goal congruence throughout the company. चला जा. तो समय सब नंबर क्या है इसका? 333। अच्छा हाँ सब नंबर ना 343 सॉरी ये है हम्म फर्स्ट पार्ट क्या थियरी है क्या? क्या ऊपर का फर्स्ट पार्ट क्या थियरी था क्या? ट्रांसफर प्राइस था लेकिन लेकिन थ्योरी के फॉर्म में था तो मैंने ऐसे लिखा था ये देख मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया ओ भाई। इसमें जो होगा ना भाई मैंने इसमें दो ओ तीन क्रेजी लिखा है भाई, बहुत कुछ लिखा था तो। फिगर कैलकुलेट करे जा रहा हूँ मैं बार बार कुछ अलग मिस्टेक हो रहा था ओके ओके। और जो मैंने लिखा वो उसका आधा पार्ट था इसके ज्यादा आधा पॉइंट्स उन्होंने बोले और वो भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले हाँ क्या? बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले पढ़ने लायक है आंसर पढ़ना एग्जाम के बाद मजा आएगा एग्जाम के बाद? मजा आएगा भाई पढ़ने में देख तू ना नॉलेज के लिए पढ़ता है मी ये बहुत गलत गलत बात है सॉरी तू नॉलेज के लिए नहीं पढ़ता है तू मार्क्स के लिए पढ़ता है अरे यार Shit. हक दिया तुमने। अरे जा भाई क्या हक दिया अभी जाने देना 4600 21,800 चल मेरा नेट प्रॉफिट आ गया नेट प्रॉफिट आ गया फिर वो आरओआई निकालने में आसानी होगी अभी आरओआई मेरा मेरा निकल जाएगा तो अच्छे से लिखने में कैसे जाऊंगा मैं परसेंटेज नहीं ठीक है अरे
के लौड़े। ये वाला क्वेश्चन 15.08। चलो ठीक है, ROI तो निकल गया 15 और 17। 15.08%, 17.72%। बी पार्ट, अभी आपने को रेसिडुअल इनकम निकालना है। नेट प्रॉफिट वो दिया हुआ है इतना, और अभी अपने को इंटरेस्ट निकालना है, नोशनल इंटरेस्ट। लेकिन रेसिडुअल इनकम का ज्यादा मार्क्स क्यों है फिर, 4 मार्क्स का क्यों है ये अपना रेसिडुअल इनकम? इस 12% क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ। बेटर है ना। क्या है? बेटर है। यस। टैक्सी सा आ गया है कि रेसिडुअल इनकम भी 4 मार्क्स का। और फिर कमेंट करना है बस इनके फाइंडिंग्स पे। हाँ, जब इनका चेक करते हैं बराबर है, आ रहा है, ROI बराबर है, RI भी बिल्कुल बराबर है। कमेंट्स। Comment on the results taking into consideration the manager's view about the residual income. If a decision about whether to proceed with the investment is made based on ROI, it is possible that Division S will reject the proposal, whereas the Division M will accept the proposal. This is because Division currently has ROI of 16%, and since Division S investment only has ROI of 15.08%, it would bring the division's overall ROI down to less than its current level. On the other hand, since Division M investment is higher than current 16%, the investment would bring the division's overall ROI up. When you consider what would actually be best for the company as a whole, you come to conclusion that since both investments have healthy return, as shown above by the residual income, so they should both be accepted. Hence, the fact that ROI had been used as the decision making tool led to lack of congruence between Division S and company as a whole. This backs up what the new manager of Division S is saying. If they used residual income in order to aid the decision making process, both proposals would be accepted by the divisions since both have a healthy RI. In this case, RI helps the divisions to make decisions which are in line with the best interest of the company. Hence, this backs up the new manager's viewpoint. It is important to note, however, that each of the methods has numerous advantages and disadvantages which have not been considered